अभी हम लोग बीटा फंक्शन पर एग्जाम्पल्स लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल सम है। तो यहां पर फर्स्ट सम, प्रूव gamma 1/4 gamma 3/4 इज इक्वल टू π√2। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद ही करना है। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको याद ही करना है बच्चों लोग। आपको gamma 5/2 gamma 3/2 gamma 7/2 gamma 15/2 ये सब मालूम है। gamma 5 gamma 10 सब मालूम है। अगर gamma 1/4 gamma 3/4 साथ में आया तो आपको ये पार्ट यूज करना पड़ता है। बहुत सिंपल है बच्चों लोग, बहुत सिंपल है। आई स्टार्ट विथ LHS, gamma 1/4 gamma 3/4। अभी आपको इसे लिखना है gamma 1/4 gamma 3/4 इज रिटर्न एज 1 - 1/4। बहुत सिंपल। मैं 1 - 1/4 के फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है, gamma p gamma 1 - p मैंने याद करवाया है। बोलो बच्चों लोग, व्हाट इज वैल्यू? π/sin p pi, π/sin p pi। मोरओवर दिस p lies between 0 to 1। gamma p gamma 1 - p is π/sin p pi, p lies between 0 to 1। अभी gamma 1/4 gamma 1 - 1/4 मतलब gamma p gamma 1 - p के फॉर्म में आ रहे हैं। सो दिस वैल्यू इज π/sin p pi। तो बच्चों लोग हम क्या लिखेंगे? π/sin p pi। p is 1/4, 1/4 into pi। What is value of p is 1/4 and that p lies between 0 to 1। That p lies between 0 to 1। सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं and hence its answer is π/sin p pi। p is 1/4। हर बच्चों को समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। pi upon, now what is sin π/4? sin π/4 is 1/√2। sin π/4 is 1/√2। तो क्या होगा बच्चों लोग? √2 ऊपर जाएगा तो इट इज √2 पाई। इट इज √2 उल्टा पुल्टा के सीधा हो गया। सो एंड हिंस gamma 1/4 gamma 3/4 इज π√2 या √2 पाई। बच्चों लोग और एक बात बता रहा हूं, gamma 1/4 gamma 3/4, 3/4 को हम 1 - 1/4 में लिख सकते हैं। gamma p gamma 1 - p gamma p gamma 1 - p is π/sin p pi and this 1/4 sin π/4 is 1/√2 and it is π√2। मुझे विश्वास है सब बच्चों को समझ में आया। सेकंड सम, 0 to infinity dx upon 1 + x⁴ is this equal to π√2/4। बहुत अच्छा सम है। अभी we start with LHS, 0 to infinity dx upon 1 + x⁴। अब ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, x² की जगह पर tan थीटा रिप्लेस करा है। क्यों? मैंने आपको बहुत बार समझाया, इफ प्लस इज देयर देन वी एडजस्ट आइडेंटिटी 1 + tan²। फॉर माइनस वी मस्ट एडजस्ट 1 - sin² थीटा बिकॉज 1 - sin² इज cos²। इफ प्लस इज देयर देन वी एडजस्ट 1 + tan², सो दैट 1 + tan² इज sec² एडजस्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल here when we replace x² equal to tan, so we get 1 + tan² in the denominator। so every time we must adjust identity 1 + tan² for plus। बहुत से substitutions है, there are so many substitutions in terms of tan। now I convert whole example in terms of theta। I convert whole example in terms of theta। so what is value of x? x is √tan theta। I will find dx। So differentiate, बोलो what is dx is? dx is what is derivative of root of tan theta? 1/2 root of tan theta and derivative of tan is sec² theta d theta। Because I convert whole example in terms of theta, x² is tan theta, dx is 1/2 root x का डेरिवेटिव 1/2 root x। Similarly root of tan का डेरिवेटिव 1/2 root tan and derivative of tan। now I want limits। what is about limits? so if x is lower limit 0, if x is lower limit 0, so 0 equal to tan theta means 0 equal to tan theta means theta must be 0। when x is upper limit infinity, x is upper limit infinity equal to tan theta, infinity equal to tan theta, so theta must be π/2। theta must be π/2।
infinity equal to tan theta. ये कब, when it is possible, if theta is pi by 2. X is 0, lower limit. So 0 equal to tan theta when it is possible, when theta is also 0, because tan 0 is 0. I replace all respective values in LHS. So step number second, very simple. Put respective values. Put respective values. 0 as it is. Now when x is infinity, theta is pi by 2. When x is infinity, theta is pi by 2. Dx is replaced by 1 by 2 root tan into derivative of tan is x square. 1 by 2 root of tan theta, and derivative of tan theta is sec square theta d theta divided by 1 plus tan square, 1 plus tan square. So it is 1 plus tan square theta. 1 plus tan square, dx is this term. Now simplifying. Now what is 1 plus tan square is sec square. This sec square get cancelled with this tan square. Now 1 by 2 is constant bhar. 1 by 2 bhar. 0 to pi by 2. Very simple. 1 by 2 root of tan theta. Convert in terms of sin and cos. So it is 1 by 2. 0 to pi by 2. ये साइन कॉस का डेफिनेशन आपको याद है, प्रॉपर्टी सब बच्चों को याद है, तो ऐसे बच्चों को सम क्लियर होंगे. हर बच्चों को फॉर्मूला, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज आता है, मैं ऐसा समझता हूं. नहीं होगा तो पहले याद करो. नाउ कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. सो टैन इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा. टैन इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड इट इज डी थीटा. तो ये हो जाएगा बच्चा वेरी सिंपल सम. ये हो जाएगा 1 by 2 एज इट इज. 0 टू पाई बाई 2. साइन का पावर, बोलो साइन का पावर हाफ, ऊपर जाएगा माइनस हाफ. कॉस का पावर, कॉस रेस टू हाफ रूट है, उल्टा पुल्टा के सीधा हो जाएगा. उल्टा पुल्टा के सीधा. साइन नीचे ऊपर आएगा, ये उल्टा पुल्टा के सीधा हो जाएगा, इसलिए हाफ एज इट इज. अभी कौन सा फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है? After this step, we use this formula 0 to pi by 2, sin raised to p, cos raised to q. So this 1 by 2 as it is. And now what is value of in this integral? 1 by 2 beta p plus 1 by 2 means minus half plus 1 by 2. Q plus 1 by 2 means 1 by 2 plus 1 by 2. Very simple. 1 by 2 as it is. It is 1 by 2 beta p plus 1 by 2, q plus 1 by 2. Now what is the answer? 1 by 4 beta minus half plus 1, that is 1 by 4, and it is 3 by 2 by 2, that is 3 by 4. Property beta 1 by 2 beta p plus 1 by 2 q plus 1 by 2. 1 by 2 beta p मतलब minus half plus 1 by 2, q is 1 by 2 plus 1. Now 1 by 4 as it is. Now what is relation between beta gamma? Gamma m, gamma n divided by gamma m plus n. बोलो बच्चों लोग, what is beta m? Gamma m, gamma n upon gamma m plus n. Now 1 by 4 as it is. What is gamma 1 by 4, gamma 3 by 4? Property. What is gamma 1 by 4, gamma 3 by 4? Property. Pi root 2 divided by gamma 1. Divided by gamma 1. So it is gamma 1 is 1. So it is overall answer is pi root 2 by 4. It is pi root 2 by 4. Gamma 1 is 1. Pi root 2 by 4. This is the required answer. This is the required answer. Okay student, next example. Example number 3. बहुत standard example है. If we observe this integral 0 to m, x raised to m, m minus x raised to n dx. For this sum, we adjust standard definition of beta function. If we put simple substitution, that substitution is x is equal to m into t. If we adjust, if we put this simple substitution, so we get this is in the form of, what is the standard definition?
0 to 1 t raised to m and it is 1 minus t raised to n dt. यहां पर अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन किया x इक्वल टू एम टी तो आपको बराबर ये डेफिनेशन आ जाएगा. दिस इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल? अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो एक पावर ऐड करना, चप्पल या शूज पहन के जाना, +1 करके जाते हैं हम. मतलब फॉर दिस एग्जांपल वी कैन इजीली एडजस्ट दिस डेफिनेशन ऑफ बीटा. For that, I replace x equal to mt, x equal to mt because m is common and we get in powers of 1 minus t. So for this definition, for this sum, we can adjust 1 minus t power. क्योंकि बीटा के डेफिनेशन में t और 1 minus t का पावर एडजस्ट करना पड़ता है. तो x से पर mt रखा तो m कॉमन 1 minus t के पावर में आ गया. आगे बराबर ही डेफिनेशन एडजस्ट होगा बच्चे लोग. So I convert whole example in terms of t. I convert whole example in terms of t. So what is the derivative of x is dx. M as it is. What is derivative of t is dt. Now what is about limits? When x is lower limit 0. When x is lower limit 0. Now put value of x as 0. So what is t is 0. When x is m upper limit. X is m. So what is value of t? X is equal to m. M equal to mt. T must be 1. Which is required in the definition. So this is very first step where we use this substitution. In second step, we replace respective values. Second step. Put respective values. Very simple. So 0 to 0. When x is m, t is 1. What is value of x is mt. Mt raised to m. M minus. What is value of x? Mt raised to n. And what is the value of dx is? What is the value of dx is m into dt. In this way, I convert whole example in terms of t by putting value of x, by putting value of x, by putting value of dx and limits. Now collect powers of m common. What are the powers of m? Powers of m is m. M ka power n. Power of m is 1. We collect powers of m. We collect powers of m. And remaining part 0 to 1. What is power of t and 1 minus t power? What is power of t is m. What is power of 1 minus t is n. So it is m raised to m plus n plus 1. और ये इंटीग्रेशन की घर से बाहर जा रहे हैं, एक पावर ऐड करो m plus 1 n plus 1 m plus 1 n plus 1 and this is the required answer. Very simple, very simple. Now this example is the very important and tricky sum in beta function. Very tricky sum. So here for this example again we can adjust this standard definition. We must use substitution in such way that we can use this definition, standard definition 0 to 1 t raised to m 1 minus t raised to n into dt. And what is the value is beta m plus 1 n plus 1. So I can adjust this definition. Now in order to adjust in this definition we use proper substitution. What is the substitution? That is first step. What is substitution? Put substitution पहले याद करता हूँ, then I will explain. What is the substitution? x minus a is equal to t into b minus a. हर बच्चों को ये substitution पहले याद करना है, बाद में मैं इसका रीजन देता हूँ ये substitution क्यों लिया. बोलो बच्चों लोग, याद करो सब लोग. x माइनस ए इक्वल टू टी इंटू बी माइनस ए, एक्स माइनस ए इक्वल टू टी इंटू बी माइनस ए. याद करो, याद करो, याद करो. x माइनस ए इक्वल टू टी इंटू बी माइनस ए. आंखें बंद करके याद करना बच्चों लोग, बाद में समझाता हूं यही क्यों लिया. याद हो गया सब बच्चों का? मुझे विश्वास है याद हो गया. अभी ये सब्स्टिट्यूशन क्यों आया? अरे भाई हमने ये डेफिनेशन लाना है तो ये रेंज 0 to 1 लाना पड़ेगा. तो ये सब्स्टिट्यूशन ऐसा है, ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन है
ये जो ए बी रेंज है, दिस ए बी रेंज कन्वर्ट्स टू 0 to 1. This converts to 0 to 1. This converts to 0 to 1. AB converts to 0 to 1. नाउ ये सबडिविजन में ऐसा जोर है जो आपको ए बी को 0 to 1 देता है. कैसे? आप ही रखो बच्चे लोग. व्हाट इज लो लिमिट? दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स के ऊपर ए रखो, आपको टी 0 आएगा. आ गया बच्चा? जो जरूरत है. नाउ अपर लिमिट के लिए, फॉर एक्स इक्वल टू अपर लिमिट बी, आप एक्स के ऊपर बी रखो, टी 1 आएगा. देखना, एक्स के ऊपर बी रखो, बी माइनस इक्वल टी इंटू बी माइनस व्हाट इज टी 1. देखो बराबर आ गया. तो फॉर लोअर लिमिट व्हेन x इज a t इज 0, व्हेन x इज b सो b माइनस a एंड t इज 1. तो ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है. वेरी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, वेरी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन. आप वेरीफाई करो. और एक बार बताता हूं, x इक्वल टू 1 एज x इक्वल टू a, लोअर लिमिट, सो a माइनस a इक्वल टू t इंटू b माइनस a, here t is 0. When x equal to upper limit b, so b minus a is equal to t into b minus a. So what is t must be 1? Subdivision. Now we want value of dx. So what is value of dx? तो यहां से आप dx की वैल्यू फाइंड करो. What is value of dx? ds स्टूडेंट, what is value of dx? So डेरिवेटिव आप लोगे. What is the derivative? Very simple. Very simple. What is the value of dx is? dx minus 0 dt into b minus a. t का डेरिवेटिव dt b minus a. So we replace dx by dt into b minus a. x minus a replaced by t into b minus a. b minus what is value of x? x की वैल्यू यहां पर फाइंड करेंगे. What is value of x? बोलो बच्चे लोग. What is value of x is a plus t into b minus a. So I convert whole example in terms of t. मुझे विश्वास है आप में से 90% बच्चे खुद कर पाएंगे. आप वैल्यू रिप्लेस करके देखना. स्टेप सेकंड, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज. पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज. बोलो बच्चे लोग, व्हाट इज रिस्पेक्टिव वैल्यूज? a to b becomes 0 to 1. a to b means 0 to 1. This 0 to 1. x minus a replaced by t into b minus a. t into b minus a raised to m t into b minus a. Now b minus what is value of x? a plus t into b minus a and whole term raised to n. Whole term raised to n. And what is dx is? What is value of dx is? dt into b minus a. What is dx is? dt into b minus a. So it is dt into b minus a. In this way I convert whole example in powers of t. Simplify करेंगे, we get the answer. Very simple. 0 to 1. Dear student, it is t raised to m. It is b minus a raised to m. b minus a minus t into b minus a raised to n, and it is dt into b minus a. b minus a minus t into b minus a. अभी 0 to 1 t raised to m b minus a raised to m. सिंप्लीफाई करो. व्हाट इज कॉमन? b माइनस इज कॉमन. हम लोग इसे ऐसा लिख सकते बच्चा, b माइनस a एज इट इज. इससे ब्रैकेट यूज कर सकता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा. आई कीप ब्रैकेट b माइनस a. नाउ b माइनस a इज कॉमन. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. I can write it as 0 to 1 t raised to m b minus a raised to m. b minus a is common into 1 minus t raised to n, and this dt into b minus a as it is. बच्चों लोग b minus a कॉमन, नॉन कॉमन टर्म दूसरे ब्रैकेट में, and it is dt into b minus a. Now collect powers of b minus a. Collect power of b minus a. b minus a raised to m, b minus a raised to n plus b minus a raised to 1.
base same, addition of power, base same, addition of power, base same, addition of power, 0 to 1, t raised to m into 1 minus t raised to n dt. लास्ट पार्ट b माइनस ए रेस टू, बच्चे लोग m प्लस n प्लस 1. नाउ इंटीग्रेशन से बाहर जाना है, प्रॉपर्टी घर से बाहर जाना है, आपको चप्पल या शूज पहनना पड़ेगा, तो पावर में एक ऐड करना जरूरी है. मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, अगर घर से बाहर जाना है तो पहनते, अगर बाहर से अगर आपको इंटीग्रल में जाना है यहां से, तो आपको पावर कम करके जाना पड़ता है, यहां पर पावर बढ़ेगा. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट सम बच्चों लोग, वेरी इंपॉर्टेंट सम. मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट सम. अभी ये वी यूज दिस सब्स्टिट्यूशन इन फ्यूचर एज ए स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी. व्हाट इज प्रॉपर्टी? फॉर a to b, x minus a raised to m, b minus x raised to n. For this type of integral, we must use substitution as x minus a. X minus a is equal to t into b minus a. In future, for this type of sum, we use this substitution. Here, this question, suppose it is asked in MCQ. So for this example, what is this substitution is? So it is of the form x minus a is equal to t into b minus a substitution. So what is a is 3, b is 7. So x minus 3 equal to 40. So x equal to 3 plus 40 is the required answer, and take it as step. For this type of example, again same. What is the standard substitution? We know that x minus a is equal to t into b minus a. What is a? Minus 1. What is b? 1. So 1 minus of minus 1. So x plus 1 equal to 2t, and we use x equal to 2t minus 1. This is the substitution. ये ऐसे substitution है which converts range 0 to 1. These are the substitution which converts range 0 to 1, and we can use definition of beta function. Now here I solve this sum in detail. I solve this sum in detail. Okay, in detail. So what is this substitution? This is our first step. First step. Second step, I convert, solve this example. Solve. अगर आपको solve के लिए पूछा example, तो मैं आपको आगे करके दिखाता हूं. So what is the dx is? Convert whole integral in terms of t, very best sum in the world. What is dx? 0 plus 4 into dt. So it is 4 into dt. Now what is substitution? When x is 3, what is value of t? For substitution, x and t. When x is lower limit 0, sorry, when x is lower limit 3, x is 3. So replace here 3, x is 3. So t is 0. When x is upper limit 7, 7 minus 3 is 4. So 4 equal to 40. T must be 1. x से ऊपर 7 रखना, t 1 आएगा. x से ऊपर लोअर लिमिट रखो 3, t 0 आएगा, जो आपको जरूरत है. And what is, I put respective values in integral. Step number 3, put respective values. बोलो बच्चों लोग, 3 to 7 means 0 to 1. x minus 3 replaced by 4t. x minus 3 I replaced by 4t. 7 minus, what is the value of x? X is 3 plus 4t. Very simple. And raised to 1 by 4. And what is value of dx is? 4 into dt. dx is 4 into dt. Now 0 to 1. 4 raised to 1 by 4. T raised to 1 by 4. 7 minus 3 is 4. 4 minus 4t. Raised to 1 by 4. And it is 4 dt. X minus 3 is 4. Minus 4. Minus अंदर multiply करो. Minus 40. Now collect powers of 4. What are the powers of 4? 1 by 4.
powers of 4 plus 1 by 4. Powers of 4 raised to 1, 0 to 1, t raised to 1 by 4, and it is 1 minus t raised to 1 by 4, it is dt. t raised to 1 by 4, 1 minus t raised to 1 by 4, 4 के सारे पावर्स कलेक्शन कर दिए. नाउ 4 raised to, बोलो बेस सेम एडिशन ऑफ पावर, एलसीएम इज 4, सो 1 plus 1 plus that is 6. अभी इंटीग्रल के बाहर जाना है, एक ऐड करो 1 by 4 plus 1 and it is 1 by 4 plus 1. So next step 4 raised to 3 by 2, 4 raised to 3 by 2, and it is beta 5 by 4, 5 by 4, 5 by 4, 5 by 4. Next 4 is written as 2 square raised to 3 by 2, and what is beta mn? What is beta mn? Gamma m, gamma n divided by gamma m plus n. Now these two get cancelled, it is 8. Simplify करना, what is gamma 1 by 5 by 4? It is written as 1 by 4 plus 1. Gamma 5 by 4 is again written as 1 by 4 plus 1, and it is gamma 10 by 4. Gamma 10 by 4. Correct? Now we know this property, gamma n plus 1, it is n gamma n. What is gamma n plus 1 is n gamma n. तो प्लस 1 के फॉर्म में क्यों ला रहा हूं? क्योंकि gamma n plus 1 is n gamma n. Very important sum, very important sum, dear student, very important sum. It is 8 as it is. Now gamma 1 by 4 plus 1 is 1 by 4 gamma 1 by 4. हर बच्चों को मालूम है gamma n plus 1, gamma n plus 1, gamma n plus 1 is n gamma n. Gamma n plus 1 is again n gamma n. And gamma 10 by 4 is gamma 5 by 2. Gamma 5 by 2. Next, what is the observation? This 4 and this 8, यहाँ पर 2 बच जाएगा. This 2 and this 2, 1 by 2. So what is the value? It is 1 by 2 gamma 1 by 4 gamma 1 by 4. बराबर है? This is gamma 1 by 4. This 4 get 8 2. These get cancelled. Now gamma 5 by 2 is 3 by 2 1 by 2 root pi. Overall this gamma 1, this 1 by 2 get cancelled, और ये आ जाएगा बच्चा. What is the final answer? 2 by 3 gamma 1 by 4 का स्क्वायर and divided by root pi. Divided by root pi. 2 by 3 gamma 1 by 4 square into root pi. This is the required answer. मुझे विश्वास है बच्चे लोग हर बच्चे को समझ में आएगा और प्रैक्टिस से ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा. प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा. बहुत अच्छा समय, मुझे विश्वास है आपको प्रैक्टिस करने के बाद में बहुत मजा आएगा. प्रैक्टिस करने के, और जो बच्चे लोग प्रैक्टिस करें उनको तो कब मेहनत का फल तो मिलेगा ही. प्रैक्टिस करना ही है. नाउ दिस प्रॉपर्टी, दिस सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम. बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम एन प्लस 1 प्लस बीटा एम प्लस 1 एन. सो वी स्टार्ट विथ LHS. व्हाट इज द प्रॉपर्टी? gamma m, beta m n plus 1 means gamma m gamma n plus 1 upon gamma m plus n plus 1 plus what is beta m plus 1 comma n? It is gamma m plus 1 gamma n divided by gamma m plus 1 plus n. Now what is observation? Denominator is same, gamma m plus n plus 1. Numerator gamma m gamma n plus 1 plus gamma m plus 1 and it is gamma n. So ये आएगा for this gamma m. What is gamma n plus 1 is n gamma n plus what is gamma m plus 1 is m gamma m gamma n divided by
What is the value? Gamma m plus 1 is written as m plus n. Gamma m plus n. आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया बच्चों लोग? हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया. Which property? Gamma n plus 1 is n gamma n. 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 ये प्लस 1 निकाल दो. m plus n gamma m plus n. प्लस 1 निकाल देना n gamma n. प्लस 1 निकाल देना m gamma n. प्लस 1 निकाल देना m plus n gamma m plus n. Now what is common from numerator? From numerator we'll take gamma m gamma n as common. Gamma m gamma n is common. In bracket it is n plus m. Here m plus n, gamma m plus n. Now this m plus n get cancelled. M plus n get cancelled. What is the answer? Gamma m gamma n upon gamma m plus n, and it is nothing but beta m comma n, which is LHS. Which is LHS. तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी बच्चे लोग. ये सम से ना बच्चों को अच्छा कब लगता है? जब वो 2 बार 3 बार बिना देखे करता है. ऐसा एक बार करने से मजा आएगा नहीं. बच्चों लोग पेशेंस रखना. बीटा बहुत सिंपल पार्ट है. आपको खाली प्रॉपर प्रैक्टिस करना. आंसर आ गया ना समझ में? 2 बार करो, 3 बार करो, तब जाके आपको विश्वास बढ़ता है. तब जाके विश्वास बढ़ता है. और एक पार्ट करने में मजा आता है. देखो एमसीक्यू में पूछा आता है या नॉर्मल आता है. व्हाट इज एलएचएस? बीटा m कॉमा n इंटू बीटा m प्लस n कॉमा p. नाउ व्हाट इज बीटा m n? gamma m gamma n अपॉन gamma m plus n. Gamma m upon gamma m plus 1. And what is the property? Gamma m plus n gamma p divided by gamma m plus n plus p. Gamma m plus n gamma p upon gamma m plus n plus p. Now what is observation? Gamma m plus n get cancelled. Gamma m plus n get cancelled. And what is the answer? बच्चों लोग what is the answer? Gamma m gamma n gamma p divided by gamma m plus n plus p, and which is the required answer. तो ये कैंसल होता है. कन्वर्ट यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ gamma. Gamma m gamma n अपॉन gamma m plus 1. Gamma m plus n gamma p अपॉन gamma m plus n plus p. सॉल्व करो, ये कैंसिल होगा. आप बिना देखे 2 बार करना. बिना देखे तब जाके आपको अच्छा लगेगा और हर बच्चे को समझ में आएगा. हर बच्चे को समझ में आएगा. नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड. बीटा n plus 1 is 1/2 gamma n square upon gamma 2n. वेरी इंपॉर्टेंट सम. मुझे विश्वास है आप में से कुछ बच्चे ट्राई करेंगे. कुछ बच्चे ट्राई करना कहां पे रुकते वो देखना खाली बस. अगर आपने ट्राई किया मतलब आपको अच्छा लग रहा है. जो बच्चों का पढ़ने का ही मन है उनको समझ जाना, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है. प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा. दिस इज gamma n plus 1 divided by gamma n plus n plus 1. Next gamma n. What is gamma n plus 1? Plus 1 कट करो, n gamma n. It is gamma 2n plus 1. Now यहां पर भी gamma 2n plus 1 कट करो, प्लस 1 कट करोगे तो ये आएगा बच्चे लोग 2n gamma 2n. 1 कट किया 2n gamma 2n. नाउ n गेट कैंसल. gamma n is gamma n ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय gamma 2n डिवाइड बाय gamma 2n डिवाइड बाय, और ये 1/2 एज इट इज. इन दिस वे वी गेट. बच्चों बहुत अच्छा समय, बहुत ट्रिकी समय और बहुत अच्छा समय. बेस्ट सम इन द वर्ल्ड. बेस्ट सम इन द वर्ल्ड. दिस इज द प्रॉपर्टी. प्रूव 0 to infinity x raised to m minus 1 upon a plus b x raised to m plus n dx. Value of this integral is 1 upon a raised to m
b raised to m beta m comma n. वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम, सबसे बेस्ट सम तो मुझे यही लगता है। बीटा का अगर सबसे बेस्ट सम हुआ तो ये डेफिनेशन में एग्जाम्पल है बच्चों लोग, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। कौन सा डेफिनेशन एडजस्ट कर सकते हैं यहां पर? वी विल एडजस्ट विच डेफिनेशन ऑफ बीटा, रेंज 0 to infinity है, रेंज 0 to infinity, सो वी कैन एडजस्ट 0 to infinity, 0 to infinity टी रेस टू, हर बच्चों को याद है टी रेस टू एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी रेस टू एम प्लस एन डी टी। अगर ये डेफिनेशन यहां पर लाना पॉसिबल है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल? बीटा एम कॉमा एन। दिस इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ बीटा। वी हैव 3 definitions of beta. First 0 to 1 range, second 0 to pi by 2, and one more is 0 to infinity. So we'll adjust in this form. If we want to adjust in this definition, what is this substitution? We find this substitution in a such way that this denominator is converted in this form. 1 plus t has some power, m plus n. So what is this substitution for bx? First substitution. Put what is value of bx? आप में से कुछ होशियार बच्चे बता पाएंगे। bx के ऊपर ऐसा करो ताकि 1 plus t नीचे आना चाहिए। तो bx is equal to 80, because if we replace bx equal to 80, so a plus 80, a is common, 1 plus t का power, and we get the answer a plus 80, ताकि a is common, 1 plus t का power, and whole example we get in this form, and we can get the definition. Very important sum, very important sum, very important sum. bx is equal to 80, bx equal to 80, bx is equal to 80. Now convert whole example in terms of t. So what is the derivative? What is derivative? बोलो बच्चे लोग, b into dx is equal to a into dt, b as it is, dx equal to a into dt. So what is the value of dx? क्योंकि हमें dx requirement है, so value of dx is it is a by b into dt. Now what is the limits? When x is 0, what is value of t? What is the limits? Dear student, x and t. When x is 0, x is lower limit 0. When we replace x equal to 0, what is t is equal to? 0 is equal to 80 means t is 0. When x is upper limit infinity, x is replaced by infinity, so LHS become infinity, infinity equal to 80 means t also infinity. In this way we get all values. Now we replace respective values in LHS. Step second, what is the LHS? LHS is 0 to infinity, very simple, x raised to m minus 1 divided by a plus bx raised to m plus n. M plus n, and it is dx. Put respective values, dear student, 0 to infinity as it is. Now what is x? X is 80 by b. What is x? Is 80 by b raised to m minus 1. A plus, what is bx? Bx is 80. What is bx? 80 raised to m plus n. Now what is dx? Is a by b into dt. What is the dx? Is a by b into dt. I convert x replaced by 80 by b, a plus 80 raised to m plus n, dx is replaced by a by b into dt. Limits as it is. Now collect powers of a and we collect powers of b. Dear student, bolo, what are the powers of a? A raised to, yellow color, a raised to m minus 1, a raised to 1, base m addition of power, a का पावर m प्लस एन, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा माइनस m माइनस n, a रेस टू m माइनस 1 रेस टू प्लस 1, एंड a का पावर m प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस, b का पावर b रेस टू m माइनस 1
p डिनोमिनेटर में है, b का पावर बेस सेम एडिशन ऑफ पावर +1 एंड रिमेनिंग पार्ट एज इट इज 0 to infinity t raised to m minus 1 divided by 1 plus t raised to m plus n dt a raised to m minus 1 plus 1 प्लस पावर प्लस से ऊपर माइनस, b का पावर कलेक्ट किया, बाकी सब पार्ट ब्रैकेट में. नाउ हियर m गेट कैंसल, 1 get cancel, here this 1 get cancel. So what is the answer? What is the answer? Dear student, answer is a raised to minus n, b raised to m. And what is the value? Definition of beta, standard definition, beta of m comma n, and which is RHS. Very simple. Dear student, very simple sum in the world, very important sum. सबसे बेस्ट सम यही है. सब्स्टिट्यूशन अगर किसी को क्लिक हो गया तो सम बहुत सिंपल. आप में से कुछ बच्चे लोग tan के फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, 1 + tan² करेंगे तो भी आंसर आएगा.